Hi guys, so आज हमारा HTML का first session है and I'm very excited today because this is the first course I'm launching on YouTube. Uh, so what we are going to cover in this thing. So let me share the screen quickly so I can tell you what we are going to cover. Uh, just give me a second. Yeah, so my screen is shared and now I'm going. Yeah. So what we will do in this class is we are going to design a web page or we can say a website which looks like this. हमें ऐसा एक वेबसाइट बनाना है जिस ऐसे ऐसे दिखे जिसमें आप देखो यहाँ पर कुछ सब sentences are there है ना and color is there, some color is I have given some color here and यहाँ पर भी color दिया है but color is I have given the color in the background. यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज किया है मैंने लाइक ये आप देखो ये दिस इज अ बैगनी कलर. यहाँ पर आई हैव नॉट डन एनी चेंजेस इन द कलर बट दिस इज आप देखो कि फॉन्ट में क्या डिफरेंस है. ओके दिस फॉन्ट इज लिटिल बिट बोल्ड फॉन्ट. ओके ये बोल्ड है कंपेयर टू दिस थिंग एंड दिस इज आल्सो इन इटैलिक फॉर्म. तो ये स्टाइलिंग किया है मैंने कि एक को बोल्ड बनाया एंड आई हैव गिवन इटैलिक एज अ स्टाइलिंग. थोड़ा सा डिफरेंट किया है यहाँ पर कुछ सिर्फ यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज किया है. यहाँ पर ये टेक्स्ट का कलर है ये बैकग्राउंड कलर ये डिफरेंस है. सो ऐसा हम एक वेब पेज बनाएंगे एक वेबसाइट बनाएंगे जहाँ पर ऐसा सिंपल सिंपल सो ये फर्स्ट क्लास है ये बहुत ही छोटा सा रहेगा. आई वांट टू स्टार्ट विद वेरी बेसिक एंड देन आई विल गिव यू द टास्क. अच्छा आपने ये बनाया तो व्हाट विल बी योर टास्क वंस यू आर डन विद दिस थिंग. सो एवरी सेशन व्हिच आई विल टेक विल बी having a we can say homework or a task because अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ and you are understanding a thing, so how do you know that okay you are really understanding a thing unless and until you do something on your own and you get the feedback कि अच्छा मैंने जो वीडियो देखा वो मुझे समझ में आया and you will gradually learn by doing. So हर सेशन में आपका टास्क तो रहेगा और इस सेशन में भी टास्क है. फाइनली यहाँ एक इमेज भी डाला है मैंने एक दिस इज अ इमेज. ये एक वेब पेज पे एक इमेज भी डाला है और लास्ट में एक लिंक है लाइक गो टू गूगल. इफ यू क्लिक ऑन दिस लिंक इट विल लीड यू टू google.com वेबसाइट. तो ये लिंक है. तो हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं कि हाउ डज ऑल दिस वर्क्स. एंड वन मोर थिंग अभी यहाँ दिख नहीं रहा है बट देखो कोई भी वेबसाइट का एक टाइटल होता है लाइक इफ यू चेक हियर यहाँ पर एक टाइटल दिया है मैंने है ना. जैसे यहाँ पर देखो आप गूगल दिख रहा है आपको ठीक है. यहाँ पर आपको कुछ और दिख रहा है यहाँ पर समथिंग एल्स दिख रहा है. सो हर एक वेबसाइट के तो टॉप पे टॉप बार है यहाँ पर है ना. यहाँ पर एक टाइटल होता है वो भी हम आज कवर करेंगे टाइटल देने से क्या होता है हाउ इट विल हैव इम्पैक्ट. बट हमें एक सिंपल से वेबसाइट बनाना है दस विच विल लुक लाइक दिस. ओके सिंपल माय फर्स्ट पैराग्राफ एंड लाइक समथिंग लाइक दैट. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट थिंग. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है you go in any folder. मेरा एक folder में section wise folder बना के रखा है. But you go to any folder where you want to this is HTML. You can make a HTML folder just like मैंने बना के रखा है and then you can create one section number one whatever. एक folder बनाओ उसमें जाओ practice करने के लिए. मैं कर रहा हूँ आप भी करो साथ में. Okay. So you also do alongside with me. You know what I am doing. Just try to copy me and see how it goes. So right click and then you will get a new option. Once you get a new option, go to the text document. Okay, and I will say okay demo. You can give any name. Okay, name of the HTML file. So demo you can give sample one whatever you want. And नाम में कुछ नहीं है आप अपना नाम दे सकते हो. A want to give ABCD आप ABCD नाम. This is just a name of the file. ठीक है. And then .txt नहीं रहेगा. कोई भी वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है .html. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना. अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो वेब पेज बना रहे हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा .html. Always remember this thing. This is a very basic thing. So I'm also trying to do this thing. And it is asking that if the file name changes, it might become unusable. Yes, I want to change it. अभी अब देखो कि यहाँ पर एक Chrome का symbol आ गया because now it is a web page. It knows this is a HTML file which will be getting opened in the browser. ब्राउजर में खुलेगा Chrome ब्राउजर में. ठीक है. मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ
See, it is opening, but now you can see this is a web page, and this is a web page which is completely blank. ये पूरा blank है, यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली है पूरा, ठीक है. बट हमें जो बनाना है वो बनाना है something like this. I will again open that png file, the image. This is not a web page, this is the image. मैंने image copy करके रखा है, ठीक है. हमें we have to make something like this, look like this, correct? So I will start one by one. I will start from this thing. My first paragraph, which look like this. So I will go here, demo.html. How to edit this thing? कैसे आप edit करोगे? You go in this thing, click on this file, then again right click on this file. Once you select this file, पहले select करो इसको, and then once it is selected, go here, click right click this file, and there's an option open with. So यहाँ देखो open with आ रहा है. Okay, आएगा open with. And then you'll get an option of notepad. Okay, to start with, you can start with notepad, no problem. सबके पास रहता है, अगर आप you're using Windows computer, notepad. अगर आप Windows नहीं करो तो there might be something else. But this is you get the option with Windows computer. आप notepad खोलोगे तो ये फाइल है, वही फाइल जो आप देख रहे हो, but ये empty. This is empty. There is nothing there. Okay. Now if I see this image, यहाँ क्या लिखा हुआ? What is written here? My first paragraph. Okay. So I will also try to write that in my first paragraph. Okay, let's save this thing. मैंने सेव किया, and then I will go in that जहाँ पर मैं डेमो देख रहा था, ये आपका डेमो HTML फाइल है. You have to just go here, इसको रीलोड करना पड़ेगा. मतलब जो मैंने चेंजेस किया है ना, अभी आप देखो कि ये ब्लैंक नहीं है, यहाँ पर मैंने कुछ सेव किया है. ओके, तो आपको ये चेंजेस कैसे दिखेगा? इसको रिफ्रेश करो. You go here, you can refresh this thing. तो आप देखो यहाँ पर आ गया my first paragraph. If you don't want this, you can directly go and click on, double click on this thing. वो भी आपको, अगर आप डबल क्लिक करोगे, it will open again in the new window. एक नया ब्राउजर विंडो में आपको दिख जाएगा my first paragraph. तो दिस इज सिंपल. तो वी आर ट्राइंग टू, सो ये सिंपल एक पैराग्राफ जो आपने लिखा HTML फाइल में वो डिस्प्ले हो गया. इट्स वेरी सिंपल. नाउ but we don't want that, we want something else. Okay, but yeah, this is a step, we are going step by step. So हमें क्या चाहिए था? First paragraph, but the color has to be, what I will say, the color has to be baggy. Okay, then one more thing, the color, this is not a color, this is more about what I will say, the styling. It has to be font and italic. तो ये कैसे करते हैं? First of all, okay, वो जाने से पहले what we will do, we will not first focus on the color. I will write this like this sentence 3 times. यहाँ पर 3 बार आया. My first paragraph, again my first paragraph, again my first paragraph. So first of all, I will not go directly into color. Let me repeat this 3 times. First of all, एक बार लिखा, second time, third time. So I will go back in this. I'll again right click this thing. Open with again Notepad. And before going into the styling part, कि अच्छा like कलर चेंज कर दो, पहले मैं ट्राई करूंगा इसको टू रिपीट दिस थिंग 3 टाइम्स. करेक्ट? एटलीस्ट 3 बार डिस्प्ले होता है क्या? मैंने एक स्पेस दिया, नेक्स्ट लाइन पे लिखा. So my first paragraph, my first paragraph, my first paragraph. If I'm doing like this, so the image जो मैंने कॉपी करके रखा है of this web page, at least ये तो आना चाहिए. इसका कलर नहीं आएगा, but at least it will look like black in this thing. Here also black, simple. एटलीस्ट 3 सेंटेंस तो रिपीट होना चाहिए. अभी क्या हो रहा है? अभी आप अगर आप जाओगे वेब पेज पे तो ये वंस है, ये एक ही बार आ रहा है. तो इसके नीचे एक बार आएगा और इसके नीचे एक बार आना चाहिए. द एक्सपेक्टेशन इज दैट इट विल कम. ओके, 3 times, but let's see what happens. So I have already saved this thing. Now I'm going to refresh this thing, but it did not appear in the next line. ये सब एक लाइन पे ही आ रहा. My first paragraph, my first paragraph, my first paragraph. Okay, so ये नहीं हुआ because ये जो आपने यहाँ लिखा है, this is a notepad file. Okay, but HTML को पता नहीं है कि ये जो second line है ये notepad नहीं समझता, because this HTML has its own syntax. जब तक आप उसको बताओगे नहीं, अच्छा ये एक different paragraph है या इस लाइन को नया लाइन पे आपको डिस्प्ले करना है, तब तक वो नहीं करेगा.
तो HTML को बताना पड़ता है, like we have to tell to the browser through HTML code. HTML is what is like some kind of syntax is there, जो हम बताते हैं. For that, what we have to do, we will again go in that folder, again open the notepad file, and I will do one thing. अभी HTML mainly start होगा with use of the tags. So there is a tag which is known as p tag, paragraph tag. So welcome to the very first tag of HTML. ये very first tag आपने सीखा, p tag लिखा, p stand for paragraph, and you close it also with the p tag. Start किया p से, end किया p से. यहाँ पर भी वही होगा, start करो p से and end with p. Again start with p, ends with p. तो ये क्या बोलता है कि अच्छा ये जो मैंने कंटेंट है, मेरा जो ये टेक्स्ट है, माय फर्स्ट पैराग्राफ, इट ये एक पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है. दैट्स व्हाई इट्स एंड्स हियर. एक नया पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है. दिस इज अ डिफरेंट पी टैग, करेक्ट, दिस नॉट द सेम. फिर अगेन एक तीसरा बार हमने ये ओपन किया. So we have total 3 tags, 3 paragraph, 1, 2, 3. Okay. So क्या result आएगा? But before jumping into that thing, one small like minor thing I forgot to tell you कि when you open a tag, जैसे paragraph open किया, paragraph बंद close किया, ठीक है, ये मतलब ये कंटेंट इनके बीच में है. तो once you start with the tag, once you end it, end करने से पहले you have to write like this. You have to give a backslash. यहाँ पर भी आपको backslash, यहाँ पर भी आपको backslash. So backslash means it is the ending of the tag. आपने start किया, आपने end किया, start किया, end किया, start किया, end किया. So always remember, ठीक है, you have to do that thing with any HTML tag. तो ये मैं first tag बता रहा हूँ, ये p tag है आपके लिए, ठीक है, simple है. Now I have already saved this thing, और मैं वो वापस से वहां पर जाऊंगा जहां मेरा ओपन था ये पेज, इसको रिफ्रेश करूंगा. अभी देखो it was like this, correct? Now after doing the paragraph, you can see it is now appearing in 3 different lines because we have given this paragraph here. So उससे क्या हुआ, they understand that this is a paragraph, there has to be some spacing and there has to be a new line. ये new line होना पड़ चाहिए because it is a separate paragraph. अगर आप स्कूल में इंग्लिश में ऐसे लिखते हो, पैराग्राफ चेंज करते हो, तो एक लाइन छोड़ते ही हो. Similarly, HTML also understand this thing. So, but बताना पड़ेगा कि एक पैराग्राफ है ये, and this is a very small one. You know, your paragraph can go very long. You can write a lot of things here. Okay, okay. So it can go really long. Okay, suppose I save this file. You can see this is अभी नया line पे नहीं आ रहा है because of some we are missing some syntax. But I will not go into that right now. ठीक है, because this is your very first class. But the point is कि ये possible हो पाया हमारे लिए to display this 3 different lines in 3 different paragraphs using the p tag. I hope this is clear to you. If it is not, please go and try it yourself. Okay, please try it yourself. Now coming back to the original task. तो ये हमने एक successfully ये 3 paragraph तो बना लिया. But now the major work comes. कि अच्छा आपने HTML तो बना लिया, but what about the color? What about the styling? Okay, so let's go one by one. So first में हमको color change करना है of the text, okay, of the font to baggy. This is a baggy color, ठीक है. So this is like a styling. We are giving style to the HTML. Okay, how do you do that? How do you can give the style to the HTML? It's not very complicated. But देखो क्या होता है, ये हमारा p tag है. उस p tag के अंदर आप जाओ, you hit a space bar, space दो, and then you open a style tag. एक style tag नहीं, sorry, style attribute बोलते हैं, knows attribute because it will be styling. Okay, so tag के अंदर कुछ भी आप लिखते हो उसको attributes बोला जाता है. अभी के लिए आप बस जानो उसका style. So style equal to, then you will give double quotes and you have to give color. So I will say color color, and the colon means the property. You go and type BAIGINI, which is baggy, and you close the double quotes. So it's very simple. आपने styling दिया, style equal to means what is the value of that thing, and you can give multiple styling in that thing. One is your color like baggy,
and you can give other things, but अभी first class के लिए just focus on one thing, color wagning, and let's save this thing. इसको save किया मैंने. Saving is very important, otherwise यहाँ पर नहीं आएगा. You have to save every time you do any changes. आपने जैसे ही changes किए, ये update किया styling, go and refresh this thing. So फिर से reload करो. I can see it's not happening. Let me see, the spelling is wrong, or P style color bagni. I don't know, bagni or BIGA. Something is going wrong. Just give me a minute. Bagni style equal to bagni. No, styling is not coming. Just give me a moment. I guess spelling mistake could be there, but just give me a moment. Why it is not coming? Let me change the U. Property name is different color or no, that is not the reason. Okay. Suppose I give this for testing purpose. Let me give red. Red is very common. तीन word का है, तीन letter का है syntax. अगर मैं इसको अभी update करता हूँ, you can see, yeah, red is happening. Bagni should happen because the text, if you go the text, this text was, yeah, this is Bagni. I'm not sure why this is not happening now. It should happen. Okay. Just a moment. Let me. So we can search. ठीक है. अगर आपको ऐसा कोई problem होता है कि रेड कलर तो आ रहा है, बैगनी क्यों नहीं आ रहा है? Because might be spelling. I guess mostly is spelling mistake. So bagni. No, it is not. So let me search. So I will just search HTML color bagni. I can get the right color. Okay, bagni is BA. Where is the bagni color? Text color, other tomato. Which bagni is there or not? This. What are different colors? Purple colors. Let me check the solution because I guess I'm missing something. Open. Okay. I will just check the syntax. I guess I'm missing something. Okay. Okay, sorry, this is not bagni. This is my mistake. This is magenta. Okay. Sorry, I guess this was my mistake. So this is magenta color. Okay, my mistake. Sorry for this. So this is magenta. So अभी मैंने save किया. I'll close this thing. I'll go to my original file. जो ये वाला है. Now you can see this color is appearing. This was magenta. My mistake. Sorry for this. ठीक है. तो अभी ये तो हो गया कि जो फोटो में है वो कलर आपको आ गया. ठीक है. ठीक है. अब सेकंड क्या है? सेकंड में ब्लैक ही रहना है, बट मुझे इसको बोल्ड करना है और इटैलिक करना है. So the copy paste is very important nowadays because if you can just copy this thing because यहाँ भी आपको स्टाइलिंग लगेगा तो आपको कॉपी करना ही पड़ेगा एंड जस्ट पेस्ट इट इनसाइड द प्री टैग. इनसाइड, नॉट आउटसाइड. यहाँ पेस्ट नहीं करना है. डोंट पेस्ट इट आउटसाइड. नो, it has to be inside the tag because tag has a meaning. HTML understand the tag. Tag के अंदर क्या है वो पता है, tag के बाहर क्या है it doesn't understand. So put this thing. But अभी हमें कलर नहीं डालना, हमें डालना है स्टाइलिंग. Like we have to give font style equal to italic. तो उसका एक syntax है very simple. Font style, font dash style and it will be italic. If I give italic, I save this thing, I can see it become italic.
ओके, इसका जो फॉन्ट स्टाइल है इटैलिक हो गया. सो वी आर अचीविंग टुवर्ड्स आवर गोल. अभी एक चीज बचा है, इसका बोल्ड नहीं है, इट्स नॉट बोल्ड. सो बोल्ड के लिए एक सिंटैक्स है. जिस टेक्स्ट को भी आपको बोल्ड करना है, लाइक यू वांट टू मेक द एंटायर टेक्स्ट बोल्ड, और यू वांट टू ओनली मेक द फर्स्ट दिस थिंग बोल्ड. ठीक है, सपोज आई वांट टू मेक ओनली द पैराग्राफ बोल्ड, दिस वर्ड from here till here. ठीक है, paragraph. I don't want to make the entire sentence. So I will go here and I will wrap this thing with B tag. B stands for bold. And I will end this thing. End भी करना पड़ेगा. So ये end यहाँ पर होगा. End करने के लिए मैंने बताया था beat again the same tag. जिससे start हो उसी से end होगा. The tag will not be different. यहाँ भी B है तो यहाँ पर भी B tag होगा. B stands for bold. But closing समय आपको ये slash लगाना है. Okay? The backward slash. ठीक है, इतना आपको याद रखो. जब भी start करते हो कोई tag तो क्लोजिंग में वो स्लैश लगता है. Now I save this thing. Now you can see it becomes what? Bold. Okay. But I have to, but according to this problem, we have to make this entire sentence bold. So आप क्या करोगे? I know you know, already know the answer. So I will remove this B tag from here. I will cut it. Paste करूँगा starting में. So that the entire sentence become bold. Okay. And now I will go in that demo.html. And you can see entire become bold. Now come to the last piece of that paragraph. तो उसमें क्या चाहिए हमें? We need to make the background as red. अभी तो टेक्स्ट को चेंज कर रहे थे कलर में ना, बट अभी हमें बैकग्राउंड रेड करना है. तो पॉसिबल है क्या? यस, बिल्कुल पॉसिबल है. हाउ इट इज पॉसिबल? अगेन आई विल गो इन दिस थिंग. अगेन आई विल कॉपी द स्टाइल फ्रॉम हियर. ओके, प्रॉपर्ली आप स्टार्ट करो. अगेन गिव अ स्पेस एंड राइट लाइक दिस. Instead of color it will be now, see दो ये क्या होता है, color is the property and the value. ऐसे font style is also property. अच्छा आपको क्या सेट करना है? You want to set the font style to what? To what value? And italic is the value. ठीक है, तो ये होता है कि it's like a property and the value of that thing. अगर आप रेड करोगे रेड होगा, जो भी करोगे वो होगा. तो प्रॉपर्टी अभी कलर नहीं चाहिए मुझे, प्रॉपर्टी चाहिए बैकग्राउंड कलर. आई विल राइट बैकग्राउंड कलर एंड सिंपल, इसको मैं रेड करूंगा. तो रेड ही है बट कलर नहीं, मुझे बैकग्राउंड को सेट करना ऑफ दिस पैराग्राफ. ये पैराग्राफ जो है, ये पी टैग को है, जो भी ये वाला है, इसका मुझे बैकग्राउंड कलर रेड करना है. मैंने कर दिया. ठीक है, अभी आप देखो कि क्या होता है. डैश, बीच में डैश है. इफ आई गो हियर यू कैन सी becomes this thing. So mission, half of the mission accomplished. अगर आप देखोगे हमने ये फर्स्ट 3 लाइंस कवर कर लिया. Only 2 things is pending. One is your image and one is your this thing, the google.com. ठीक है, इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इमेज, बट इमेज आएगा कहाँ से? तो इमेज ऑलरेडी डाउनलोडेड है. मैं आपको इमेज दूंगा, डोंट वरी. दिस इज द इमेज व्हिच आई एम यूजिंग एंड द नेम ऑफ दिस इमेज इज html.png फाइल. हर एक इमेज का एक नाम होता है, इसका नाम html.png फाइल. ओके, और ये उसी फोल्डर में होना चाहिए जिस फोल्डर में आपका HTML फाइल है. अभी आपका HTML फाइल यहाँ पर है तो इसी फोल्डर में वो फाइल होना चाहिए. ठीक, तो इजी होता है टू गिव द पाथ ऑफ दैट इमेज. ठीक है, इमेज इट कैन बी लोकल पाथ आल्सो, इट कैन बी ऑनलाइन पाथ आल्सो. ऑनलाइन भी वी कैन गिव, बट वो मैं बाद में बताऊंगा. फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको डाउनलोड करना है इमेज एंड यू कीप इन द सेम फोल्डर. ठीक है, सो यू कैन फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड, आई विल लेट यू नो. जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट. तो मेरे पास ऑलरेडी ये इमेज है. So what I will do, I will go here. ठीक है, अभी तो ये हो गया. Now go to the image. तो इमेज का भी टैग होगा, जैसे पैराग्राफ का टैग है p, तो इमेज का टैग है img. img स्टैंड फॉर इमेज. इमेज तो आपने बोल दिया, बट कौन सा इमेज? तो उसके लिए हम यूज द सोर्स टैग src. सोर्स इक्वल टू, नॉट टैग, एट्रीब्यूट. सॉरी, आई एम ऑलवेज सेइंग टैग. इट इज एट्रीब्यूट. जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट था इन पैराग्राफ टैग, वी हैव सोर्स एट्रीब्यूट इन इमेज. कि अच्छा ये सोर्स क्या है, क्या फाइल का? तो फाइल सोर्स नथिंग बट द नेम ऑफ द फाइल html.png. मैंने डाला html.png एंड डबल कोट्स क्लोज. तो डबल कोट्स स्टार्ट एंड उसमें वैल्यूज लिखते हैं. ठीक है, देन द टैग, टैग को भी खत्म करना है, टैग भी खत्म किया. बट ये टैग थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज इसमें कुछ कंटेंट नहीं है ना. सपोज यू विल राइट ओके इमेज and then you will write image. ये this is not valid for image
तो इस इमेज के में कोई टैग नहीं है, इसके बीच में कुछ नहीं है, दिस नो इनर कंटेंट, फिर इसको बीच में आपको रखना है ना, इमेज का सोर्स दिया वो इमेज डिस्प्ले करेगा। तो थोड़ा सा ये सिंटैक्स डिफरेंट होगा, ऐसे आपको नहीं करना है, थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट होगा कि इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दैट यू जस्ट पुट अ स्लैश हियर इटसेल्फ, तो ये क्लोज हो गया, मतलब स्टार्ट भी इसी टैग से हुआ और एंड भी इसी टैग में हो गया। यू डोंट नीड सेपरेट टैग, सेपरेट क्लोजिंग टैग, वन टैग इज सफिशिएंट फॉर दिस इमेज। और ये इमेज का पाथ दे दिया, दैट्स इट। ओके, नाउ सेव दिस थिंग and try to again reload that page. So if I reload this page, अब देखो एक इमेज आ रहा है, बट बहुत बड़ा इमेज आया, देखो इतना बड़ा इमेज आप देख रहे होगे, the size is quite huge. Okay, but if you see the screenshot which I have taken of the web page, final web page, this is a screenshot of the final web page. It is much small. See, okay, it is much small. You can easily view in one single shot. But here, in reality, you can see the image is very huge. It is going and scrolling is happening. है scroll यहाँ पर हो गया. So how to decrease the length or height of the image? Height, जैसे height है, ठीक है, इसका height कम करना पड़ेगा because ये बहुत बड़ा हो गया है। तो उसके लिए भी एक और attribute होता है in the image only, that okay, one attribute is source, but size बड़ा हो गया तो एक और attribute है, इसको बोलते हैं height। तो space दो, है ना, every attribute will have a space in between. Let's say you have to give a space and height equal to, can do any, so height is in pixel. Actually, don't worry about all these things. Just think about, I'm giving you some random value which you'll understand. Okay, so I will write something as 150, something like that. And I will close this thing. And now, and when I refresh this thing, you can see this is coming. But now I think this become too much less, because if you see the screenshot, it थोड़ा सा बड़ा है. It was, if you see this and versus पैराग्राफ यहाँ पर एंड हो रहा था और ये इमेज यहाँ पर एंड हो रहा है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वेब पेज, इसका लेंथ देखो आप। बट यहाँ पर इफ यू सी इट इज वेरी स्मॉल, सो आई गेस वी टू इंक्रीज द साइज। तो 150 से मैं विल मेक इट 300, 300, एंड आई गेस आई कैन सी, yeah, I guess this is better. 300 is better. It is almost yeah, similar to what is in the image. See, yeah, it's almost similar to what is there in the image. Okay, not perfect, but yeah, almost similar. Now come to the last part. ये तो हो गया। Now last part is the link. ये लिंक है, आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो गूगल पे जाएगा, और ये टेक्स्ट है, गो टू गूगल इज अ टेक्स्ट, उस पे आई कैन गिव एनी टेक्स्ट ABCD, बट ABCD पे आप क्लिक करोगे तो वो आपको google.com पे लेके जाएगा। इसको लिंक बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं। उसके लिए क्या टैग होता है, दिस इज द लास्ट थिंग, स्टॉप। सो उसके लिए टैग होता है ए स्टैंड फॉर एंकर टैग, ए इज द टैग। इसमें भी आपको एट्रीब्यूट देना पड़ेगा कि अच्छा ये लिंक कहाँ लेके जाएगा, तो उसके लिए होगा href इज द एट्रीब्यूट। जैसे इसमें दो स्टाइलिंग था, स्टाइल था, इसमें src सोर्स है, सिमिलरली यहाँ पर href टैग है, एंड देन डबल कोट्स वैल्यू, डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट एंड्स। बट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कि क्या वैल्यू है उसका। एंड हियर आल्सो द इनर कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज वहाँ टेक्स्ट क्या है, आप बोलोगे गो टू गूगल तो वो वही डिस्प्ले करेगा। अगर आप एबीसीडी बोलोगे तो एबीसीडी डिस्प्ले करेगा, वो भी देखेगा। टैग स्टार्ट हुआ है, टैग एंड हुआ, सो यू टू स्टार्ट द टैग, यू टू एंड द टैग। ओके, लाइक हियर, बिकॉज वी हैव अ इनर कंटेंट हियर, है ना। अभी लिंक के लिए ये एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज यू नो द एड्रेस है google.com, मैंने एक दे दिया google.com, ठीक है, मैंने सेव कर लिया। Okay, and now I will go in this file and refresh this thing. Sorry, this is the image. Mistake. I'll go in this web page. यहाँ पर जाओ, दो go to google.com, आपको आ रहा है, ठीक है। Now ये प्रॉब्लम हो गया कि ये सेम लाइन पे आ गया, बट इमेज में देखो क्या था, इमेज में आपको डिफरेंट लाइन पे था। ऐसा क्यों? बिकॉज in this thing we have not identified that this two are different paragraph. So either you put this inside the paragraph tag और इसको नया पैराग्राफ टैग में दो। मैं इजी बनाता हूँ, मैं इसको नया पैराग्राफ टैग में दूंगा। स्टार्ट शेयर, एंड शेयर, मतलब ये एक नया पैराग्राफ है, तो नया पैराग्राफ है तो डेफिनेटली एक नई लाइन पे आएगा। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, वी कैन एनक्लोज दिस थिंग। अच्छा, ये कंटेंट है, ये एक पैराग्राफ के अंदर ही आएगा, ठीक है।
तो वो स्टार्टिंग टैग आपको लिखना पड़ेगा और एंडिंग टैग लिखना पड़ेगा. आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू यू. Okay. Now, if I go here and now I refresh this thing, now I can see it is going to next line. So we are almost there. Okay. Now, लिंक है तो आप देखो ये जो साइन है ये हाथ का बन जाता है, हैंड सिंबल. Okay, it becomes a hand symbol. So if I click on this thing, it is not taking me to google.com, but it is taking me to some local path. Okay, because we have not given the full URL. ठीक है, तो उसके लिए क्या करो आप, you go to google.com to copy this address from directly from this address bar है ना, copy, control A, control C, control A, select, control C, copy, and then you paste it here. यहाँ paste करो value. So this is not the proper format. You have to put the entire name, like entire value. This is the proper value or proper URL. We can say हर एक एड्रेस का वेबसाइट का proper URL होता है, फॉर्मेट होता है. ये proper full format है, full इसका लेंथ है. Now if I have done this thing, now I refresh this thing. Look and feel तो कुछ change नहीं हुआ, but now if I click on go to google.com, see what happens. It takes me to google.com. So I might think maybe it might be a little bit not complex, but a little bit new to you, I will say. But from my experience, I will tell you, when you try something new, at the first class, you will not understand 100%. कभी ऐसा नहीं होता है. And this will happen with the best teacher. You study with, I'm not the best teacher, but you study with best teachers also. फर्स्ट क्लास में आपको सब कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या, आप पढ़ाई नहीं करोगे. It doesn't work like that. तो आप वापस से इसको देखो, वीडियोस वापस से ट्राई करो, अंडरस्टैंड करो. And I'm giving you two things. One is your homework. What is your homework? So I'm giving you this image, and this image, if you see, you have to make something like this. Okay, so I will have, you have two image. One is this. Okay, this is a bit, this is already we have done, ये हमने already completed this thing in the class. अभी हमारे क्लास में ये लिया, but जो आपको complete करना है वो थोड़ा different है. वो ऐसा है, ठीक है, it looks like this. आप इसको देखो, आप खुद से ट्राई करो, ठीक है. और I have given the solution also, but don't look into the solution at the first moment, because first of all you try yourself. एक दिन लगने दो, बट खुद से करो, बिकॉज इफ यू विल नॉट डू योरसेल्फ, आप डायरेक्टली सॉल्यूशन ओपन करोगे एंड यू विल लुक इनटू दैट, देयर इज नो पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी ये फोल्डर बना के रखा है, जहाँ पर ये जो हमने क्लास आज लिया इसका ऑलरेडी बना के मैंने अपलोड किया हुआ है. वो लिंक में दे रहा हूँ आपको. ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये अगर आप डबल क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा सॉल्यूशन, एंड यू कैन राइट क्लिक and open with notepad, you will get the solution. But don't look into that thing directly. First of all, आप खुद से try करो, because this small thing matters. Okay, so definitely we'll meet in the next class, and I hope if somebody is really interested into learning front end, just stay with me. Front end developer बनना है और UI developer बनना है या UI designer बनना है, तो HTML से तो start करना ही पड़ेगा आपको. तो you stay with me. I'm not expert in designing, but yeah, development I am expert in that thing. So definitely will make you a good UI developer or front-end developer if you really want to learn this thing. That is my promise. Okay, so with this thing, I will end this thing. Before ending, I'll give you the link of the. So this link I'll paste in my description of this video when I'll upload this thing. तो ये लिंक क्या है, GitHub का लिंक है, ठीक है. github.com पे जाओ /Rahul Akhoury without a space. There is no space. Again, I'm repeating. Anyway, I'm giving the link, but still I'm telling. github.com/Rahul Akhoury without a space, and go in this React by Rahul folder repository. ठीक है, इस पे क्लिक करो और यहाँ पर आप देखो कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर कोड पे आके जस्ट डाउनलोड द जिप फाइल. आप जिप फाइल डाउनलोड करो एंड यू कैन अनजिप इट, यू विल गेट ऑल द थिंग्स. ठीक है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ. व्हाट इज दिस, HTML फोल्डर में जाओगे आप. आज हमने सेक्शन 1 लिया, तो सेक्शन 1 में जो हमने लिया है वो यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है. सैम्पल टास्क अपलोडेड है, ठीक है. इमेज इज नॉट अपलोडेड, बट इमेज में आप अपलोड कर दूंगा जस्ट नाउ. ठीक है, फॉरवर्ड टू अपलोड, तो अपलोड कर दूंगा. तो यू विल गेट एवरीथिंग, ओके, व्हिच इज नीडेड to complete do the practice which I am taking in the session, plus जो आपको टास्क दिया है होमवर्क के, एज अ होमवर्क you will do that thing. So you will know whether you are able to do that thing or not. And if you are not, you can just open this task in HTML file. इसमें solution भी दिया हुआ है, but that is the latter part. So with this thing I will end this video, and
this session, I guess it will be definitely helpful for you. And yeah, let's meet next time. Thank you for watching.